August 1995, we are finally given permission to shoot inside the women's prison in Lucknow. We have been warned, no talking to prisoners, no interviewing them. The prison complex is clean and well maintained. The prisoners look after the gardens themselves and also run a creche for the prisoners' children. Many of these children were born in this jail. Women are encouraged to attend literacy classes and qualified teachers are brought in to teach them. The inmates do productive work in order to improve their skills. They also earn some money for their efforts. In the masala unit, women grind spices for the prison kitchens and for sale. The food is cooked by the women themselves and is first sampled by the jailer, Mrs. Abdi. Abdi was quite a jailer, as we were to gather later. This is one of the barracks in which the women are locked in every evening. They sleep on cement beds and are allowed very few belongings. A doctor visits the prison hospital every day. She is assisted by nurses who stay close by. During emergencies, the healthcare workers can be called in immediately. We had read about brutal conditions in Indian prisons, but this jail in Lucknow came as a big surprise to us. We had not imagined that there would be social workers conducting spiritual sessions here. The men's prison close by has a similar well-maintained look. During the daytime, male inmates move about freely. They also keep themselves engaged in various workshops, and some even run shops outside the campus. Every year, male prisoners are given leave to visit their homes. Women, we were told, would not be given such freedom. ब्रजेश, विजय, सुनैना, चुनबुदिया। अगर राज्य सरकार ने उनको निरुद्ध करके रखा है यहाँ पे, तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि इनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति न की जाए। और मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि इनकी प्रतिपूर्ति बाह्य समाज की अपेक्षा ज्यादा बेहतर ढंग से राज्य सरकार अंदर कर रही है। What really interested us was an event that took place in 1994. 33 women prisoners, all of them convicted for life, were released from the Lucknow women's prison. We decided to speak to some of the released prisoners to get their perceptions of jail life. काम ना करें हम लोग तो डंडा से, वो इतना बड़ा वो रहता रूल, मारते थे कि काम करो। जैसे उन्होंने काम करने को कहा और किसी ने देर अवेर की या समय इस क्लास पे नहीं पहुंची तो उनको सजा देना, उठा बैठी लगवा देना, मतलब डंडे चार्ज भी कर देते थे। तलुटिया के बच्चा होम में था तो उसी गम के मारे वो अपना बैठी रही कि भगवान आज हम ये दंड ना करे होते, नहीं भोगते तो हम जेल में नहीं आते। तो वो अपना महसूस करती रही, रोती रही बैठ के। तो उहे आए तो मारिन धड़ाक से ना कान पट्टी पर। तो हम कना क्लास में से जल्दी से आ गए। तो हमने कहा जेलर साहब आप तो कान में मार दी हो। वहाँ पत्थर के खटिया हैं सीमेंट वाले, उस पे हम लोग सोते थे। कोनो चरपाई जैसे है उसमें फटे हुए हैं, जैसे फूटे हुए हैं, तो उसमें बिच्छी और सांप निकलते थे। जब हम लोग बोलते थे जब ऐसा है, इसमें सांप निकला, इसमें बिच्छू निकला, तो सब लोग कहते तुम लोग तो ऐसे ही करती हो और यहाँ सब आराम चाहती हो, जेल काटे आई हो, तुम्हारा घर नहीं है। सब लोग कहते हैं तुम्हारे बाप के घर थोड़े है। लंबादार का 5,000 रुपये महीना के हिसाब से रख लियो तो 20 साल 22 साल रहे हम, तो कितना पैसा हुआ हैं। और काम कर रहा है तो भार चूल्हे में जा कितना पैसा होता। कटोरी में कभी डाल लेते थे तो कभी उसमें कीड़े निकल रहे हैं, कभी सब्जी में निकल रहे हैं, कभी कच्ची रोटी, कभी पेट भर के वहाँ खाना नहीं खाते थे। The women were very critical of the way the spice unit was run. धनिया में जो आरा मशीन नहीं चलती है वो आती थी, तो उसमें के वो ज्यादा से धनिया जैसे उझनवा के
और उसी में हमसे मिलवाती रही चुप्पे से। तो हमने कहा जेलर साहब देखिए ये बंदी सब खाएंगे तो पेट में तो नुकसान करेगा, कहें कि कम वक्त इसको मिलाओ जल्दी से, आज नहीं तो तुमको मारेंगे हम। मिर्चों में ईंटों की सुर्खी छनवा के डलवा दी, धनिया है उसमें और कुछ बुरा सा कूड़ा मिलवा दिया, इस तरह से कर दिया करते हैं। Today, all these women stay within a radius of 300 kilometers from Lucknow. Some, like Adhari, live in remote villages, not easily accessible by road. Others, like Radha, stay in cities. All come from poor rural families. Most do not know how to read or write. 33 women released in 1994 were all serving life-term sentences. Officials tried to tell us that the state took the initiative to release them. महिलाओं के प्रति समाज में एक अपने सरकार का अच्छा दृष्टिकोण साबित करने के लिए ये कदम हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उठाए थे। However, when we spoke to some of the released women, a different picture emerged. हमको किसी ने नहीं छुड़ाया, हमें डॉक्टर ने और वकील ने छुड़ाया। हम लोग डिस्ट्रिक्ट जेल गए तो डॉक्टर साहब के मेहरबानी से छूट गए, नहीं हम लोगों के कोई सुनवाई ही नहीं करता था। ये जो मुर्तजा डॉक्टर साहब हैं उन्होंने पूरी मदद करी, जो औरतें कितने कितने दिन की बंद हैं। We gathered that Dr. Murtaza was a jail doctor when these women were in prison. We located him in the civil hospital in Lucknow, where he is now posted. जिस टाइम वहाँ पे विमेन प्रिजनर्स आई तो अबाउट देयर आर 52 लाइफ कन्विक्ट्स जो ऑल ओवर यूपी आई थी और उनको उम्र कैद की सजा थी। उनको जब हमने एग्जामिन किया तो उसमें कुछ तो मेंटली इंसेन थी और कुछ को टीबी की शिकायत थी और कुछ काफ़ी ओल्ड थी, एक आध को काफ़ी मतलब ब्लाइंडनेस थी, कुछ हार्ड ऑफ हियरिंग की केस थी। अच्छा, ये लोग रोया करती थी और इनकी ये रिक्वेस्ट थी कि इनके छुड़वाने के लिए कोई कोशिश की जाए। I came in contact with Dr. Murtaza. He came and met me and he informed the problem relating to the lady prisoners. He said that he was posted in jail and he was very much worried about the medical condition of those lady prisoners, and he requested me that I should move petitions before High Court. Then I went to jail. I visited jail along with Dr. Murtaza. I visited so many times and I got informations relating to all the lady prisoners. The legal issues regarding the release of life-term prisoners appeared fairly complex. It seems that life-termers in Uttar Pradesh can be considered for release after 14 years if 1. Their conduct has been good in the jail, 2. They have no previous crime record, and 3. There is a certainty that the released prisoner will not commit another crime. In order to file petitions for these women, IB Singh had to access a lot of information from the jail records. Strangely, no lawyers allowed direct access to these records. I had no right to see the documents of the state government. They could have said that all right, you go and move to the High Court. If High Court will summon the documents, then I can furnish it to the High Court. IB Singh had to get the information quickly. How did he manage it? Actually, my statement may harm to some of the jail authorities. But I had to take a great task. And anyhow, with the help of some of the jail authorities, I was able to look into those documents which were kept very secretly inside the jail record rooms. It appears that following legitimate means would have created more problems. That could take too much time. And maybe that they may conceal material theft. They may say that no, the document is not available, or the jail conduct is not available, or that jail, in the meantime, they may manipulate the documents relating to the jail conduct or the previous antecedents or anything like that, which can hamper the cause of the convict. Abdi, the jailer, was apparently furious when she realized that the women had signed their petitions. गुस्सा ऐसी बात का था कि हमारे बिना पूछे इन्होंने आगे कदम कैसे बढ़ाया और यहाँ तक इन्होंने करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। कहने लगी कि तुम लोगों ने हमारी जैसे नौकरी लेना चाहती हो, इसीलिए तुमने ऐसी गद्दारी करी, और जो हम
तुम लोगों की खुद ही मदद करते हैं तो तुम लोगों ने चुपचाप से मुकदमा कैसे चला दिया? तो जेलर साहब ये डंडा लेके हम लोग धमकी दी, तो हमने कहा कि हम नहीं डरेंगे। आज तक ले बहुत हम दबा, मगर अब नहीं हम दबेंगे। For some reason, the jailer tried to get the women prisoners to sign on blank papers. The women were suspicious. अब एक एक करके औरतें बुलाई कि एक कोरा कागज लिए थी तो उसमें दस्तखत कराना चाहती थी कि कोरे कागज में तुम लोग दस्तखत कर दो। तो जैसे हम लोग थे कि हम कोरे कागज में दस्तखत नहीं कर सकते और किसी भी कागज में हम दस्तखत नहीं कर सकते। तो जेलर साहब कह रहे हैं कि सुमित्रा, इन लोग के दरवाजा अंदर से बंद कर दो, सबको लेकर आओ यहाँ। तो हमने कहा औरतें दस्तखत नहीं करना, हरगिज दस्तखत नहीं करना। She tried to move an application on behalf of the prisoners that the prisoners have not filed any petition and their thumb impression is not genuine. So this information I was also given by some of the prisoners, but I was informed that those prisoners refused to put their thumb impression on those documents and that document could not be produced before the court. The petitions were filed in the High Court. The case came up for hearing. Once a person has been found guilty of committing murder, then the minimum sentence which is provided for that offence is a life sentence. When the law is that every person who has been convicted or sentenced for murder is liable to be punished with minimum imprisonment of life, how you can claim that you had a vested right to be released? Their argument was that they have got no right to be released. Then my argument was that they may not have a right to be released, but they have a right to be considered for release under the legal provisions with all fairness. The most important question is that what would be the effect on the society if such person is released from prison? Whether the general public will have faith in the judiciary or in the judicial system of this country or not. I had to show that the convicts have passed substantial period inside jail. There is reformation in their behavior and their act, and there is no previous antecedent. I tell you that as regards to all these lady prisoners on whose behalf I filed petition, there was no any other criminal record. When the matter came up before my court, then I realized that some of the ladies have underwent the required sentence and they should be released. Some were suffering from various sort of diseases, and under the law they were also entitled to be released because the jail manual provided it. The High Court judges ruled in the women's favor. Many women who had not even completed 14 years were also released by the state governor using his discretionary powers. The actual event of the release was conducted with great fanfare and ceremony by the state authorities. These women would still have been languishing in jail if Dr. Murtaza had not helped them, or if I.B. Singh had not fought on their side. After all, some of these women had been in jail for periods ranging from 14 to 26 years. Why were their cases not considered earlier? That was the lack of interest on the part of the state officials. Bureaucrats have got no interest to look into all these matters. You know, all these officials who are appointed to do the welfare of the prisoners, to look into the welfare of the prisoners who are released, they have also to be kept watch by the officials. They have also got no interest to look into. The jail superintendent presented a different picture. जब 14 साल की इनकी सजा व्यतीत हो गई हो तो हम ऑटोमेटिकली शुरू करते हैं इनके रोल्स गवर्नमेंट को भेजने छोड़े जाने के संबंध में अपनी आख्याओं के सहित. Clearly this had not happened, and one important reason was that the women were not aware of their legal rights. लीगल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक महिला प्रोबेशन अधिकारी नियुक्त है जो इनको लीगल अवेयरनेस की जानकारी देती हैं, और हमारी जेलर इनको लीगल अवेयरनेस की जानकारी देती हैं. हमारे यहाँ डिप्टी जेलर है महिला, वो इनको लीगल अवेयरनेस की जानकारी देती हैं. The convicts were not able to give information that
when they were convicted, what is the date of their conviction, what is the number of sessions trial, who was the judge who convicted, what were the offences for which they were convicted. They were unable to give any information. The women were clear about one fact. The jail officials did all they could to prevent their release. फिर भी वार्डरे का कहें, अरे तुम लोग कत्ल करके आई, छूटने खाते, छूटना कैसा, यही हलवा पूरी खाओ लो अपना मस्ती से। वो तो सबको कहती थी कि इन औरतों को कोई है ही ना लेने वाला, जाएंगी कहाँ। जैसे अब तुम किसी को मार के आई हो, कोई मार के आया है, कोई कुछ करके आया है, तो घर गांव वाले वैसे ही स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो हत्यारे में इंसान हो गया, इसलिए तुम लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। रुकावट बहुत की उन्होंने, बहुत अंत तक रुकावट की। छुड़वाने के बारे में लिखा पढ़ी बहुत फैलाए फिरती थी, काफी कि हम बस छुड़वा रहे, तुम लोग को छुड़वा रहे। अगर यहाँ से लिखा पढ़ी जैसे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो हुआ कागज फाड़ के हुआ फेंक देती थी, दूर कूड़ेदानी में फेंक देती थी। अगर हम लोग जो पढ़ी लिखी हैं वो कागज मिल गया तो हम लोग पूछते थे कि आपने जो हमारी दरखास्त भेजी नहीं, ये तो कूड़ेदाने में पड़ी थी। तो बाद में सोचा करती थी कि और कोई होगी, हम लोग कहते थे कैसे और कोई होगी, जब जो ऐसा कागज ऐसा मिला है तो कैसे और कोई होगी। इतनी महिलाएं थी, उनमें 2-4 महिलाओं का ऐसा रिकॉर्ड था कि गांव वाले नहीं पसंद करते थे। वो सोचते थे, वो ही रिकॉर्ड ये दिखाया करती थी कि इस तरह से कहीं भी छूटने के लिए हम लोग एप्लीकेशन दें, या कोई बाहर का वकील आया या कोई अधिकारी आया, उससे हमने कहा सुना, तो पहले 2-4 औरतों का रिकॉर्ड आगे रख देती नहीं कि जिससे इन लोगों के छूटने में और बंधन पड़े, आगे इन लोगों की कार्रवाई बंद हो जाए। The jail authorities must have had a good reason to resist the release. अब जितनी औरतें ज्यादा होंगी, साबुन ज्यादा आएगा, तेल ज्यादा आएगा, बल्ब ज्यादा आएंगे, मिट्टी का तेल ज्यादा आएगा, हर चीज ज्यादा आएगी, तो कुछ तो लाभ होता ही होगा। तब तो वो चाहती कि औरतें इतनी रहें। अब कोई चीज के लिए 2 किलो आई तो उन्होंने 1 किलो 1.25 किलो बढ़वा दी, बकाया बची अपने घर में भेज दी। तो इस तरह से हर तरह की चीजों से फालतू बचाने से उसमें फायदा ही फायदा था। देखो साबुन आया बहुत सी औरतन में, तो किलो 2 किलो बच गया, तेल आया किलो 2 किलो बच गया, राशन हर एक चीज बचत होती है, हर चीज की बचत होती है, उन्हें फायदा क्यों ना है। बचत से उनको क्या फायदा। और किसे मिलती बस बचत, और से काम करती हैं, कितना फैक्ट्री चल रही दुनिया की, इतनी आमदनी होती है, फैक्ट्री में ना बचत मिलती। और तो दिन में 50-50 रुपया की एक औरत काम करती, और वहाँ पे उसमें से ना बचत होती, और तो उनको 10-20 रुपया पकड़ा दिया, अल्लाह खैर सल्ला। जो जेल अथॉरिटीज हैं वो नहीं चाहते कि प्रिजनर्स छूटें। गवर्नमेंट तो चाहती छूट जाए, हाई कोर्ट चाहती छूट जाए, लेकिन जेल अथॉरिटीज जो है, बिकॉज जेल इज इंडस्ट्री, उनका इंटरेस्ट लिंक्ड है मतलब प्रिजनर्स की स्ट्रेंथ से, so they don't want that should be released. We were not allowed to interview the jailer of the women's jail. The jail superintendent insisted on speaking on her behalf. वो सिंपैथी के भी तहत बताना पड़ता है हमें कि भाई घबराओ मत, इतने दिन तुम्हारे जैसे कट गए, 14 साल पूरा हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ से छूटने का इंतजाम हो जाएगा। तो उससे एक आत्मबल बढ़ाने की भी नीयत से हमें अवेयरनेस इनके अंदर जागृत करना है, ताकि ब्रूड न कर सके, इनकी जो ये अवधि है शांतिपूर्वक संतोषपूर्वक व्यतीत हो जाए। It seems that there were some others who were not happy about the women being freed. जिस महीने में हम लोगों को रिहाई होनी थी, उसी महीने में जो हर माह साईं बाबा वाली आती हैं महिलाएं, कभी 10 आया करती हैं, कभी 15 आया करती हैं, कभी 20 आया करती हैं, तो भगवान के आगे सभी सिर झुकाते हैं। तो उनसे भी हम बहनों में पूछा करती थी, बहन जी हम कब छूट जाएंगे, साईं बाबा में कब छुटाएंगे। तो इस तरह से जो आई थी भजन मंडली में महिलाएं आया करती, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम आकर यहाँ पर क्या घास खो देंगे। जब बाहर के महिलाओं के इस तरह से शब्द हैं, तो वो तो अधिकारी तो अपना सब चाहते ही। The released women also told us about a social worker who used to frequent the jails. We went to her house in Lucknow. Whenever I used to go there, they would cry bitterly and say, please do something to help us. So, I had no power. I could only
appeal to the government on their behalf, approach the authorities for their sympathetic consideration so that these women could be discharged from the jail. वो आती थी, वो कहती थी हम छुड़वाने जा रहे हैं तुम्हें, आज नहीं तो कल छुड़वा रहे हैं, ऐसा करवा रहे हैं, ऐसा करवा रहे हैं, बस तसल्ली देती रही, मगर छुड़वाया उसने किसी को नहीं है. We have a prison reforms committee. That is one of our standing committees on all India basis also. And our international president, Dame Mariam Dell, some time ago she came to Lucknow, and we just took her round to see the women's jail, Nari Bandi Niketan of Lucknow. She was very happy to see the jail. She said, I could have never imagined the jail could be so nice in India. एक दफे मंत्री जी आए जेल दिवस में, तो मैं खड़ी ही गई, नहीं तो जो आओ तो हमा सुमा कोई आओ मैं बोलती जरूर. छूटने के लिए बोलने में मैं कभी ना चूकी, तो मैं यही से बोलने लगी. तो क्या कह रही है भाई बाहर को कि मिथिलेश आप भी पकड़ो पकड़ो ऐसा पकड़ो खींच लो ऐसा, कैसे बोल रही है. The role which is played, should be played in such matters are not being played by our social groups and organizations. They belong to the upper strata section of the society. They can address meetings, they can attend seminars, they can go to foreign countries, but they don't rush to redress the grievance of the ordinary citizen or the person who is subjected to cruelty. No social worker has ever questioned the manner in which these women were convicted. All the women came from poor rural households and had little or no education. They were unaware of the complexities of legal procedures, and they did not have the resources to hire a lawyer. Consequently, they had to rely on lawyers appointed by the government. सरकारी वकील किया था हमने, उस समय मदद करने वाला कोई नहीं था, तो सरकारी वकील द्वारा. अब सरकारी जानती हो, सरकारी जल्दी नहीं आता है पास में मुलजिम के, और जैसे आपने प्राइवेट करा है तो वो 10 दफे आएगा कि उसको पैसा देना है, और सरकारी आ गया कभी नहीं आ गया, ऐसे मुकदमा सब लड़ती रहे. The government has a strange policy of appointing inexperienced, poorly paid lawyers in such cases. On the other hand, the government counsel appointed for defending the state against the release was a very senior lawyer. Supreme Court has already laid down that the right to legal aid is a part of the procedure established by law, provided by Article 21. What I think the time has come for the Supreme Court to go a step further, and I'm sure it will, but say that the lawyers provided must be of ability, experience and eminence, so that the scales are not unevenly tilted. I think the time has come for that. One of the released women is still inside the prison. Nirmala is mentally disturbed and her family does not want to accept her. Many released women have faced social ostracism in their villages. एक वो थी रमला नाम की उन्नाव की, वो उसने पहले बताया था कि मैं जमानत पर गई और जिस रास्ते से हम निकलते थे देहात का मामला था, खेत के किनारे से, तो अगर गांव के लोग आते थे तो वो रास्ता काट के दूसरे लोग से चलते थे. While some like Kulsuman have been accepted by their families, others face problems of rehabilitation. Dr. Murtaza has found jobs for Shakila and Shanti and provided them with a place to live in. But these are limited individual efforts. There aren't any organized groups I've come across who are organized statewide in prison aftercare. In fact, we have no aftercare service worth the name, which exists in other countries. There's no aftercare, there's no probation service as such. So basically, as I said, prison has never been attended to as a concept. Kiran Bedi has been actively involved with prison reforms when she was Inspector General of Prisons at Delhi's Tihar Jail. A lot goes on behind the prison, which is so painful, but who gets to see it? Nobody. Even the superintendents of the prison don't get to see it because they don't walk their prisons. They don't see what's happening in their own prisons. They don't attend prisons enough.
So if the superintendent or the immediate officers of the prison don't see, then there is nobody to see. And the lower staff is like the fence eating the grass. They eat whatever they can eat which belongs to the prison. If Lucknow jail was unfair to the women prisoners, other jails are perhaps worse. Poolam Devi, now free, has spent 11 years in a jail in central India. तो वहाँ ऐसे मारते हैं, जो औरत के शरीर है उसमें मिर्ची भरते हैं, डंडा ना मार के, और इतना गंदा सताएंगे कि वो दोबारा कहीं बोल ही नहीं पाएगी. किससे कहेगी औरत? जैसे जेल आएगी आया, उस औरतों को ऐसा खड़ा कर दिया लाइन से. जेल आएगी पूछेगा कोई परेशानी तो नहीं है, तो सबको पहले समझा दिया जाता डंडा लेके, किसी ने शिकायत कर दी तो छोड़ दी जाओगी, और उस दिन जरूर मारा जाएगा. सुबह जरूर सब औरतों को किसी के चांटा घूसा, किसी की डंडा पड़ेंगे कि ये शिकायत न कर दे. Nirmala, meanwhile, continues to live in the Lucknow jail for women. A year ago, a journalist asked her whether she knew she was in prison. अभी कहाँ जाएंगे इसके बाद यहाँ से? मेला. मेला? क्या देखेंगे मेले में? मेला में खिल्ला. हाँ? खिल्ला. मेला? हाँ. यहाँ कहाँ आई हैं आपको मालूम है? जेल क्या होती है आपको पता? जेल देखी है कभी आप?